resultants. So reaction you can find out by using sigma fx0, sigma fy equals to 0. And summation of moment is always equals to 0. Moment आप हरदम किसके अबाउट लोगे? फिक्स सपोर्ट. नॉर्मली आपका एक फिक्स सपोर्ट रहेगा, एक रोलर सपोर्ट रहेगा. बाद में आपके पास टाइप्स ऑफ लोड आएंगे. तो एक लोड है हमारा पॉइंट लोड और एक लोड आएगा हमारा यूडीएल. अगर यूडीएल डब्ल्यू है और उसका स्पैन अगर एल है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे पॉइंट लोड से. तो इसका पॉइंट लोड यहाँ पर ऐड करेगा और क्या ये पॉइंट लोड इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल रहेगा. और ये जो पॉइंट लोड है क्या ये L/2 फ्रॉम बोथ साइड एक्ट करेगा. एक लोड हमने और पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. तो ये लोड में हमारा ये इंटेंसिटी W हो जाएगा, ये हमारा स्पैन रहेगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ रहेगा. ट्रायंगल के अंदर हरदम सेंट्रॉइड L/3 फ्रॉम 90 डिग्री. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्पैन है. तो आपका सेंट्रॉइड वाला लोड यहाँ रहेगा. और क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 W इंटू एल होता है. और ये जो डिस्टेंस रहेगा वो L/3 रहेगा. तो ये डिस्टेंस रहेगा 2L/3. करेक्ट. इसके बाद में अगर आपका ये मेन बीम है और आपके पास एक एक्सटेंशन आ गया तो एक लोड आपके पास इस तरह से एक्ट हो रहा है. तो क्या इस लोड को हम एसेंट्रिक लोड बोलते हैं. और ये जो बीम है ए बी, क्या इसको हम मेन बीम बोलते हैं. और ये पॉइंट हमारा सी हो गया. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपका डी है तो क्या इस लोड को हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं मेन बीम के ऊपर. जब भी हम किसी लोड को शिफ्ट करेंगे तो उसका क्या चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल नॉट चेंज. तो एफ वैसे दिखेगा, पॉइंट सी के ऊपर लोड एक्ट करेगा. और क्या ये क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट देगा. और ये बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा. तो इज इट एफ इंटू डी. करेक्ट. मतलब एक बीम को अगर एसेंट्रिक लोड है तो आपके पास टोटल लोड कितने आएंगे, 2. एक आएगा सेम लोड और एक आएगा मोमेंट. इसके बाद में अगर एक बीम आपके पास फिर आ गया और आपके पास एसेंट्रिक दोनों तरफ है और एक लोड आपका इस तरह से एक्ट होता है और दूसरा लोड ऐसा एक्ट होता है और ये दोनों फोर्स इक्वल है और इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है. तो क्या इस फोर्स को भी दोनों को मिला के हम कपल बोल सकते हैं. कपल बोल सकते हैं. तो ये जो दोनों है ये चेंज हो जाएंगे और ये कपल में आ जाएगा. मोमेंट में और कपल में थोड़ा डिफरेंस है. मोमेंट इज कॉज्ड बाय फोर्स एंड कपल इज कॉज्ड बाय 2 फोर्सेस. अगर आप कपल को रिप्लेस करोगे तो आपको फोर्स नहीं दिखा देगा और आप फोर्स को रिप्लेस करोगे तो आपको फोर्स दिखाई देगा प्लस एक मोमेंट दिखाई देगा. उस मोमेंट को आप कपल नहीं बोलोगे टेक्निकली. तो यहाँ पर मोमेंट रहेगा और ये मोमेंट जो रहेगा वो F इंटू डी रहेगा. अच्छा, क्या गलत हो गया मेरे से. क्या इसका डायरेक्शन गलत हो गया. और ये जो वेक्टर होता है मोमेंट वाला वेक्टर, ये कहीं पर भी एक्ट हो सकता है. ये फ्री वेक्टर है. तो इतना आपको किसी भी प्रॉब्लम के अंदर पहले ट्रांसलेट करना है. Your idea is to convert UDL, eccentric load or triangular load or couple load into equivalent point load and equivalent couple. और उसके बाद फिर आप रिएक्शन निकालोगे और फिर SFD के लिए स्टार्ट करोगे. यहाँ तक ओके. So if you try for left hand side section, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपके जो ओरिजिनल साइन कन्वेंशन है वही यूज करना है. तो ओरिजिनल साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर फोर्स अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव लेना है और फोर्स नीचे है तो उसको नेगेटिव लेना है.
और अगर आपका मोमेंट क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर आप RHS से स्टार्ट करते हो तो आपका जो अपवर्ड रहेगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव। जो डाउनवर्ड रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो क्लॉकवाइज है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप दोनों की प्रैक्टिस करिए, लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिस आप LHS की करिए, और किसी किसी केस में आप RHS की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है dV/dx इज इक्वल्स टू -W, करेक्ट। इसका मतलब है कि हम dV को -W इंटू dx लिख सकते हैं। W मतलब तुम्हारा लोड, और अगर हम इसको फिर से जैसे कि इसको XY कोऑर्डिनेट में डाल देते हैं, और ये आपका x है और ये आपका dV है, मतलब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं dV, तो विल यू गेट इंटीग्रल ऑफ -W टाइम dx, करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे y और इसको हम बोल रहे हैं x। मतलब अगर हम यहाँ पर लोड ले रहे हैं, लोड डायग्राम है तुम्हारी, जो आपको डायग्राम देंगे दैट इज कॉल्ड एज लोड डायग्राम। सो दैट इज लोड डायग्राम हियर। तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है dx मतलब एक स्ट्रिप है, इज इट करेक्ट। और क्या W मतलब उसकी हाइट है, तो ये dx है और W इसकी हाइट है। इसका मतलब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अगर आपका लोड चेंज हो रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ये जनरलाइज कर रहे हैं, तो क्या अगर हम 1 to 2 निकालते हैं तो क्या ये टोटल एरिया मतलब इंटीग्रल W dx हो गया। तो अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं 1 से 2, तो क्या ये बनेगा V2 माइनस V1। शेयर फोर्स को V से डिनोट करते हैं। सो दिस इक्वल्स टू एरिया अंडर लोड डायग्राम। That is called as delta V. Remember, it's a change. Absolute नहीं निकालता है. It will always calculate change. If there is no load, then W will be equals to 0. And therefore area will be equals to 0, and if area equal to 0, delta V will be equal to 0. So it means that V1 is equal to V2. So what does it mean? Will the SFD will change or will not change? SFD remains constant. For that section is dm by dx is Vx. What is Vx? The shear force at that section. Dm is called as change in bending moment, and dx will be the change in that particular distance. So what is dm? Dm equals to Vx multiplied by dx. इसका फिर से एक मतलब हो गया कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फिर से, अगर इफ यू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द राइट हैंड साइड, इज दिस ग्राफ इज V ग्राफ एंड इज दिस वन इज dx, सो कैन वी कंक्लूड द राइट हैंड साइड इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल ऑफ थिकनेस इक्वल्स टू dx एंड हाइट इक्वल्स टू V. नाउ इफ the shear force will change like this from 1 to 2. So is the area under this graph
can be obtained by integrating the equation dm from integral vx to dx 1 to 2. So is it equals to m2 minus m1? Again remember, it's a change in bending moment, not absolute value. Is same as area under which diagram? Is it SFD diagram? Is SFD. The another rule that we have developed is, suppose we have given here one beam, and in this beam there is no load change. अगर लोड चेंज नहीं होता है तो तुम्हारा एसएफडी चेंज नहीं होगा. इज इट करेक्ट? अगर एसएफडी चेंज नहीं हुआ तो तुम्हारे बीएमडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर यहां पर रेक्टेंगल बनता है, एसएफडी में अगर रेक्टेंगल है तो बीएमडी में क्या बनेगा? 1 डिग्री हरदम कम होते रहेगी. सो आपको ट्रायंगल मिलेगा. इज दैट करेक्ट? ट्रायंगल है तो फिर तुम्हारा बीएमडी क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा. इसका क्या मतलब है? अगर हम लोड से एसएफडी की तरफ जा रहे हैं और लोड का डिग्री n है तो एसएफडी का डिग्री कितना रहेगा? 1 से कम हो जाएगा. और एसएफडी से हम बीएमडी की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमारा डिग्री 1 से और कम हो जाएगा. कि बढ़ रहा है. सो डिग्री विल इंक्रीज बाय अनदर 1. मतलब ये कितना हो जाएगा? n+2 हो जाएगा. व्हाट इज डिग्री फॉर दिस? 0. व्हाट इज डिग्री फॉर दिस? 1. एंड व्हाट इज डिग्री फॉर दिस? इज 2. व्हाट इज डिग्री? इज y x to the power n. This equation represents y is equals to 0 or y is equals to constant. That is why degree is n equals to 0. This line equation represent y is equal to x or sometimes multiplied by x. मतलब slope change हो सकता है. This is y is equal to x square or k times of x square. और अगर SFD तुम्हारा डिग्री 2 में है तो फिर तुम्हारा BMD कितने बनेगा? 3 में बनेगा. और उसी प्रकार जो स्लोप की वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा. अगर रेक्टेंगल ऊपर है तो उसको पॉजिटिव लेना है, नीचे है तो माइनस. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेंज द स्लोप. द डिस्कशन दैट वी अप्लाइड फॉर लेफ्ट हैंड सेक्शन इज एप्लीकेबल टू द राइट हैंड सेक्शन ऑल्सो. So one is point load 24 kilonewton, one reaction at point A and one reaction at point B. If we apply the moment about B, the total moment must equal to 0. So 24 kilonewton will make anti-clockwise moment. So this is 24 multiplied by total distance is 1050 plus AY will make clockwise moment, so AY into 800. So your answer is 31.5. So sigma Fy is 0, so minus 24 plus AY plus BY equal to 0. From this find out the value of BY. Value of BY is negative, it means that assumed direction is wrong. So we'll modify value of BY and then we'll substitute this value. So we have changed the direction of BY. Now put up the value here. AY equals to 31.5 and BY equal to 7.5. Now do not again write minus. सिर्फ पॉइंट लोड के ऊपर कैलकुलेशन करना है. पहला एसएफडी बना समय हरदम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट लोड? इज 24. सो गो डाउनवर्ड 24. देयर इज नो लोड, इट रिमेन कांस्टेंट. Then there is a 31.5, so 31.5. This one is minus 24. This total is 31.5, so this is 7.5. In between this point to this point,
there is no load, so this value remain constant, and finally we close here at 7.5. You start and end at 0. As far as simply supported beam is concerned, and as far as the overhang beam is concerned, the BM at end is always equals to 0. And in the case of cantilever, the BM is 0 at free end but is available at fixed end. So you have to first calculate this area. Area of this figure is a rectangle is minus 2.25 multiplied by 24. So that is 6. Is this area is downward? इसका मतलब हम नीचे लाइन बनाएंगे. अगर रेक्टेंगल है तो नीचे क्या बनेगा? ट्रायंगल. और इसका एरिया है, एरिया ऑफ दिस फिगर इज 24 into 0.25, that is 6. So I will write here minus 6. I think it's a kilonewton meter. तो ये हो गया हमारा 0.8 तक कैलकुलेशन हो गया. Further, now we'll consider the second rectangle, that is this rectangle. So this rectangle is 7.5 multiplied by 0.8. So what is the area of this figure? Is it same as 6? But will you treat this as a positive area? So this one is minus 6 and this one is plus 6. So what is the final value? Minus 6 plus 6 is equals to 0. If it is rectangle, then it's a triangle. Is it correct? And अगर ये पॉजिटिव है तो फिर इसका स्लोप भी पॉजिटिव रहेगा. अगर ये नीचे है तो फिर इसका स्लोप नेगेटिव रहेगा. So what is the maximum bending moment for us? So this value is called maximum bending moment. Now after this problem is transferred to the bending stress, or from this figure it can be transferred to shear stress. So this one is the case of simply supported beam, and we have two types of load. One is moment is given, one is 4 kilonewton force is given. All distances are given. At B we have roller support, and at point A we have fixed support. So we have two reaction at A and one reaction at B. आप सभी लोग उसके रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना निकालिए. Now to find out the dy, you take moment about A. मोमेंट लिया ना सभी ने? अच्छा, ay1 आ जाएगा और ax का तो सवाल ही नहीं है, दैट इक्वल्स टू 0. सो ay come out to be 1, dy come out to be 3. सभी का 3 बराबर है. रिएक्शन हो गया. शैल वी स्टार्ट विद एसएफडी. एसएफडी लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. तो पहले लेफ्ट में कितना फोर्स है? 1 kilonewton. So we'll go up 1 kilonewton, then remain constant. Moment, there is no role of moment in SFD. Forget about moment. So it will remain constant from this point to this point also. Agree? Moment has no role on SFD. Then it's a 4, so it will move downward. हमारा already 1 है. Now this is 4 downward. It should be equals to minus 3. And there is no load from the next 2 points, so it remains constant, and finally we close at 0. So this is SFD. Now as we all know, the BMD for simply supported at end is always 0. So this is 0, at end is always 0. Now what is this bending moment? So how much is the size of rectangle? Is it 4 meter by 1 meter? Is it positive? इसका मतलब ये बेंडिंग मोमेंट ऊपर जाएगा यहाँ तक. नहीं, यहाँ तक. Is it correct? हमको पूरा एरिया लेना पड़ेगा कि बेंडिंग मोमेंट में हम ऊपर का फोर्स ले लेंगे. ऊपर में बेंडिंग मोमेंट है ना यहाँ पर, तो हम सिर्फ इतना एरिया लेंगे. तो ये एरिया कितना हो गया? 1 into 2. Is it 2? What is the area of this rectangle? 2. Why we have plotted our upward side? Because हमारा rectangle किस side है? Upward.
इसका मतलब स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव चेक करेंगे. दिस वैल्यू इज 2 kilonewton. द बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 2. इज इट करेक्ट? क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, this one is positive. Positive plus positive, your value will suddenly change at the given section, and you can show this by the vertical line. 2 plus 2 is 4. और हम ये एरिया कैलकुलेट करते हैं. तो इसका हाइट कितना है? द हाइट इज 1, द विड्थ इज 2, so is the area of this figure is 2. This one is 2, previous value is 2. Now what about this area? Is it above the x-axis? So this 2 will be added in the previous value, and we have a rectangle here, so we have a triangle here. This one is 6. Previous value is 4, new value is plus 2, 4 plus 2, 6. So we are up to this point. And finally we'll close this. So what about the area of this figure? Is it equal to -6? And therefore we'll join this point with this one. So what is the maximum bending moment? The maximum bending moment is 6 kilonewton meter. Cantilever with a UDL over entire span plus 1 bending moment. Is it clockwise? Clockwise, no? Okay, 6. So for fixed end we have 3 reactions. अगर फिक्स है तो उसके पास 3 रिएक्शन रहेंगे, एक AX, AY and one is bending moment at A. For cantilever, do not use the bending moment at end point is 0. Total sum is always 0. That is true. So first of all, what is AY? So we can calculate AY just by summing FY. Correct? So sigma Fy is equals to 0. So here Ay is equal to 4. Agree? Then sigma Fx 0, so Ax is 0. Remember, total sum is 0. I have not written moment about A. Now this moment of about A, I have taken clockwise or anti-clockwise. No section. अभी सेक्शन वेक्शन कुछ नहीं है. Is this is anti-clockwise, so this is minus MA. This one is clockwise, so this is plus 6. What is total load of this one? Is 2 into 2, and will it at distance 1 from this, and this total value must equal to 0. So what is the value of MA? This is total is 10. So assume direction is correct. So now we start with the section idea. So let's say this distance equals to x, and let's say this any section MN. So which side we are taking? Right hand side. For right hand side, downward is positive, correct, and counterclockwise is positive. These are exactly the opposite notation of right hand side. Left hand side. Force, is it downward, and its a value equal to 2 multiplied by x, and is it positive? Is this value is positive? And if you put this value, suppose this point is B point, so at B your value of x is 0. So what is the shear force at point B? Is also equals to 0. At point A, value of, what is the value of x? Is it 2? So this is 2 into 2, that equal to 4. Agree? 4 na? So that equals to 4. Because you are putting x equals to what? 2. What is the bending moment at point B? What is the shear force at point B? 0. What is the shear force at point A? 4. As far as this section is considered, is this 4 is on left hand side,
as far as this section is considered, is AY is on left hand side, वो प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? माइनस. So you have to start and you have to end again at same point. What is the degree of this curve? Is it 2? Degree is 2 or 1? 1. To observe the free end, is it 6 kilonewton? And is it applied at one section only? Is this the clockwise? Clockwise? So anti-clockwise is positive, so clockwise will be negative for the right hand side section. So what we'll do, we'll move downward. How much downward? 6. Now this total distance is 2. What is the area of this triangle? Area of this triangle is half base into height. And this 4 and this minus 4, will it become minus 10? So maximum bending moment will come equals to 10. अच्छा, क्या बनेगा? लाइन बनेगा या फिर पैराबोला बनेगा? It will not rise like this. It will not rise like this. The parabola will go like this, and then it will fall in this fashion. So actually ये free hand है. Peak उसका यहाँ पे रहेगा. Now what is this value? Minus 4, minus 6, minus 10. The right hand side, if your area is above, you treat it as minus. Okay, all the sign convention has been changed. If you are on the left hand side, your area is above, you take it positive. But if you are working on the right hand side, if area is above, you take it minus. So minus 4 and minus 6, minus 10. And what is the degree of this curve? The degree equals to 2. And the degree of this curve is 1. And this one is SFD. What is the maximum bending moment? Maximum bending moment is 10 and is always at fixed support. Always at fixed support. And what is the bending moment at the free end now? 6. I will modify my statement. Last time I said the bending moment at free end for cantilever is 0, provided no external bending moment is applied. If 6 kN is not applied, then what is the bending moment at the free end B? It must be 0. If that 6 is anti-clockwise, then 6 will be marked upward. Is it correct? And that 6 plus this 4, area is 4, is minus. So final moment will be equals to plus 2. Correct? वो आप घर में try करना है. So we have 2 point load, one 10 kN, one is 8 kN, and we have clockwise 15 kN. This problem is to be again solved by right hand rule. मतलब right side लेके हम solve करेंगे. तो हमारे सभी convention फिर से उल्टे चलेंगे. In all cantilever problem or SFD problem, normally AX is always equals to 0. Now use sigma Fy equation and find out reaction. So 10 is minus 8 plus AY. So is AY equals to 18. So it's a minus MA because anti-clockwise. 10 into 2 is clockwise, 8 into 5 is clockwise, and 15 is clockwise. So your answer is 75 kilonewton meter. Now let's construct SFD. To construct SFD, we'll consider two sections. One section is AA and one section is BB. The section A is valid from 0 to L, 0 to 3. The section A is valid from 0 less than x less than 3. And section B is valid from कहाँ से 3 less than x less than equals to 5. The two separate calculations. पहले सिर्फ इसके बारे में सोचते, सेक्शन A के बारे में. If we consider the section A only, then this distance is x. Then what is the value of
Vx. So there is only one force on the right hand side, and is it downward? The downward is positive. Correct? Bending moment has no role on Vx. Now what about Mx? Is this bending moment is a clockwise? Is this bending moment is a clockwise? So this is minus 50. Correct? Now what is the bending moment of 8 above section A? Is it also clockwise? What is the bending moment of 8 above section A? Is it also clockwise? So sign is minus 8 multiplied by x. यहाँ तक okay? Now if I take this point, some point here, some point, if I take one point here, and one point, so I take an A point, let's take this point equal to D point, and let's take this point equal to E point. So as far as E is concerned, what is the value of x? Is it 0? At point E is x is equals to 0. So what is the shear force at point E? 0. And what is the bending moment at this point E? Is it minus 15? Agree? So the shear force will be equals to 8 and bending moment equal to minus 15. So shear force will be here and bending moment right now is minus 15. For A, no, not for A, for D. For D, what is the value of x? Is it 3? Yes. For point D, what is the value of x? 3. So what is the VD at this point? It is still plus 8. What is the bending moment at point D? Is minus 15 minus 8 multiplied by 3. Is it minus 39? Correct? Minus 39. Now once we have done this calculation, I think this point is 8. 8 is correct. So यहाँ से लेके यहाँ तक 8 बराबर रहेगा constant. Now this is a rectangle, so it will be equals to what? Triangle. This one is 8 and this one is minus 39. Now we'll go to the section B. Now to consider section B, first I will erase this part. I don't need this. Now my section start from BB. So this distance is x. So first of all, what is Vx? Now this time you have to calculate all the shear force on the right hand side. 8 is positive plus 10 is positive and this is 18. Correct? What about the bending moment? All the right hand side. So 15 is minus 8 multiplied by x. And what is the distance of 10? Is it minus 10 x minus 3? This time your domain is from 3 to 5. इसका मतलब है आप पॉइंट E का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हम D का कैलकुलेशन कर सकते हैं फिर से. तो D करने के लिए आप x की वैल्यू कितना रखोगे? 3. So what is bending moment? What is the shear force at this? Is 18. And you calculate the value of M at D just by putting x equal to 3. So this value is 0. This is minus 24, minus 15, minus 39. So what happened to the shear force? The shear force has gone to 18, but there is no change in the bending moment diagram at point D. Agree? A के लिए x distance हो गया 5.
So if x is 5, what is the VA? Is still 18, correct? So what happens here? This value remains constant, that is 18, and from here we'll close with minus 18. So this one is your point A. What about the bending moment about point A? So minus 15, minus 40, minus 20. Is that value is still 75 and minus 75. We have a rectangle here, so we'll join this by triangle. It has a different slope. Finally we'll finish with minus 75. This minus 75 and this 75 will close it to 0. Now what is the maximum bending moment? Is 75, correct? What is the maximum shear force? 18. Maximum shear force 18. Is that correct? इसका मतलब अगर यहाँ पर जो भी नट बोल्ट लगाना है तो उसके लिए shear force अगर यूज करना है तो कितना यूज करोगे? 18. Okay, चलो check on the board. We have one reaction 12, we have second reaction 36, and we have 8 kilonewton point load. Now you divide this section into 3 parts. One is AB and one is BC. Now first try for AB section. Now what is the limit for AB? 0 less than equals to x less than equals to 4. Consider here one section. Show any section here. Show this distance equals to x. Now compute the value of Vx. Now is this Vx for this section is 12 upward is positive value and minus W into x, that is 12 minus 8 multiplied by x. Is this fine? Now similarly you can calculate mx equals to, what is the bending moment of 12 about the section AA? Is it clockwise? So it's a plus 12 multiplied by x. And what is the equivalent point load of this one? Is it W into x, that is 8 into x, and is that will act distance of x by 2. So that equals to minus, the load is 8 into x and it will act at a distance of x by 2. इतना समझ में आता क्या? The Vx at point A, you substitute x equals to 0. If you substitute x equal to 0, is VA equals to plus 12. So you start with plus 12. Plus 12, no? So start with plus 12. Now what about this line? Is this line has a negative slope? Y is equal to mx plus c. Is the coefficient of x is minus. So what is the bending moment at point B? For this you have to put, what is the shear force at point B? So put x equal to 0. What is shear force at B? Is 12 minus 8. X कितना रखना है आपको? 4 into 4. So 12 minus 32, is it equals to minus 20? Minus 20 is correct. Huh? Minus 20 is correct. Now check this value here. This is minus 20. Now in the region AB is value crosses from plus to minus. It means that there is a certain point D, and what is known to you about point D? Is a V at point D equal to 0? If this is equals to 0, then is 12 minus 8x equals to 0. If you solve this, x equals to what? 1.5. So you are sure about this distance, that is 1.5.
if this one is 1.5, then how much is left with you? Is 2.5. यहाँ तक okay. Now, as you know, A is always on left hand side, the moment will be equals to 0, so there is no need for this one. What is the moment at point B? So we'll put 12 into x, that is 4. This one is minus 8 into 4 into 4 by 2. What is this value? 48 minus कितना हो जाएगा? 64 minus 16. The answer is this is minus 16. Minus 16 is correct. Now you can calculate one more value, that is at point D also. Now you want to calculate at point D, so what do you substitute for x? 1.5. Now this one is 12 into 1.5 minus 8 into 1.5 into 1.5 divided by 2. How much is this value? Is it plus 9? Are you getting plus 9? Okay, back to this. Now check this. Is this line has a negative slope? This line has a positive slope or negative slope? Negative slope. इसका मतलब parabola कैसा रहेगा? Downward. If the parabola is downward, it will start from here. It will attain a value of equals to what? 9. And somewhere here, it will attain a value equals to what? 16. So it will go like this, rise and then fall to here. Is this fine? Now what is this value? Is it 9? And is this value equals to minus 16? Now do you obtain your one point E where your bending moment is 0, and that point is called as point of contraflexure. Now what is special about point E? That equals to 0. So you can obtain this distance, that equals to 12 multiplied by x. This one is 4x square equals to 0, and you will find this value of x equals to 3. So you can find out the distance of point of contraflexure, and that equals to 3 meters from the left end support. This much information you can gather only from first section AB. Now if I show you this section, so shall I go for right side or shall I go for left side? If I go to the left side, I have to do lot of calculation. If I go to the right side, I have to do very small calculation. Is that correct? So I will solve BC by left hand side section. So all my sign convention will be 0. Now when you go for calculation, it is known to us that the shear force at this point is 0. Correct? Shear force at this point is 0. And this one is rectangle, so this must be triangle. Agree with me? Agree? Okay. And this one is rectangle, so this must be equals to triangle. Fine. So it will close like this. That's all. Finish. No calculation done. Job done. What is maximum bending moment? 16 or 9? 16. Where is the point of contraflexure? 3. Is that correct? Now how are you going to start for rectangle? Sorry, geometric method. अभी geometric समझ में आएगा आपको? Check कर लेते हैं. Very quick, huh? What about this area? It's a triangle. 18 into 1.5 divided by 2. Is it 9? Is it positive? Positive. So 9 ऊपर. What about this area? 2.5 into 20. 2.5 into 20 divided by 2. 25. Is it minus? Previous value is plus 9. This one is minus 25. So net value is what? Minus 16. And finally we are closing this. What is the width of this one? 2 into 20. 40. 40 का half. ऐसे है ना? अच्छा ये 36 ऊपर चाहिए. This diagram has to be corrected. Is it correct?
तो ये कितना ऊपर जाएगा 20, और ये 16 ऊपर जाएगा, और ये बाद में क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 16 इंटू 2 32/2, तो आपका एरिया मैच हो गया। फाइन, अभी क्लियर है?